हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। गाइडेंस है चैप्टर नंबर 52 आज का टॉपिक है और ये चैप्टर थर्ड सीरीज है फॉर स्पेशल सेंसेस आई। और फर्स्ट सीरीज में चैप्टर जो पहला था विच वाज चैप्टर नंबर 50 आई से रिलेटेड पहला चैप्टर, उसमें वी स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट ऑल द ऑप्टिक्स एसोसिएटेड विद विजन, जिसमें हमने फिजिक्स की काफ़ी सारी बात की थी। देन इन द सेकेंड चैप्टर विच वाज चैप्टर नंबर 51 we talked about how the images are processed, particularly in retina. So retina की processing, उसकी different layers वगैरह. And today is going to be the last chapter for the special sense of vision. And this chapter will talk about central neurophysiology of vision. जिसका मतलब ये है कि जब एक दफ़ा ये इमेज देखें ज़रा, अचानक मेरी इस पर नज़र पड़ी है. I did not plan to explain this, but that's a good one. So these are your beautiful eyes, and once the light rays enter the eye, it ultimately, after a lot of pathways and passages, it reaches to the brain. So ये cerebral cortex तक पहुंचती है सारी information. यहाँ cerebral cortex में इसकी क्या processing होती है? This is what is known as central neurophysiology of vision. Okay, so this chapter is particularly going to focus on how your images are actually processed in brain. अब इसमें एक मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि एक्चुअली हमें क्लियरली अभी भी नहीं पता कि हाउ आवर इमेजेस आर एक्चुअली प्रोसेस्ड इन ब्रेन. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज एक्चुअली फ्रॉम द एनिमल एक्सपेरिमेंट्स. ऑब्वियसली एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में एक ट्रैक को काट के देखा क्या हो रहा है, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को निकाल के देखा क्या हो रहा है. सो वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन डेसिफर की कि हाउ द इमेजेस आर बीइंग प्रोसेस्ड. लेकिन पॉइंट ये है कि 100% वी आर नॉट श्योर कि हाउ योर ब्यूटीफुल आइज एक्चुअली प्रोसेस द इमेज टू द ब्रेन एंड हाउ डज द ब्रेन देन प्रोसेस दोज इमेजेस. बिकॉज आप ज़रा सोचें ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कॉम्प्लिकेशन का लेवल कोई नेक्स्ट लेवल है. बिकॉज यू नॉट ओनली सी इमेजेस बट यू ऑल्सो रिमेंबर दैम. सो फॉर एग्जाम्पल यू नो कि ये बंदा मैंने देखा हुआ है. आप अपनी विजन को मेमोरी के साथ भी लिंक करते हैं, आप अपने विजन को इमोशंस के साथ लिंक करते हैं. किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इमोशन में कोई खास बंदा याद आ रहा है, कोई चीज़ याद आ रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो इट्स नॉट सिंपली अ विजुअल पाथवे, इट्स मोर देन दैट. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पाथवे और जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है. अक्सर स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लग रही होती है, बट सोचो अगर सारी इन्फॉर्मेशन पता लगे तो वो कितनी मुश्किल होगी. सो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट हेडिंग दैट वी हैव टू कवर इज द विजुअल पाथवे. सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट मास्टर इज दिस पाथवे. और अगर ये पाथवे आपको समझ में नहीं आता देन यू आर एब्सोल्युटली स्टक, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि जो लाइट रेज हैं वो जब रेटिना पे पड़ती हैं तो उसके बाद इमेज की प्रोसेसिंग किस डायरेक्शन में हो रही है. सो दिस इमेज इज़ अ वेरी नाइस वन विच एक्सप्लेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर विजुअल पाथवे. सो इन्होंने भी इस फिगर से ही चैप्टर को स्टार्ट किया है, फिगर 52.1. सो दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड द होल चैप्टर विद दिस फिगर. It shows principal visual pathway from the two retina to the visual cortex. So here are the retina. ये हमारा eyeball है, lens से light rays enter होंगी, and these are the retina. और retina से ये images पहुंचती हैं to the visual cortex. So from one end to the other, ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है networking का, this is what is known as visual pathway. Okay? The visual nerve signals leave the retina through the optic nerve. At the optic chiasm, the optic nerve from the nasal half of the retina cross to the opposite side, where they join the fibers from the opposite temporal retina. So basically what we are talking about is कि retina को दो halves में divide किया है. So this one यहाँ पे बीच में suppose this is the nose of the person, क्योंकि try to imagine the orientation. This is the front side, this is the back side, and this is the you're looking at the person from above, for example. So that's the front. So that region is the front region, and this region is the back region. Okay, so in the middle, so that will have to be the middle region. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर मुझे बनाने होते तो मैं कान बना देता. So for example now if you can orient yourself to the head of the person. So if this is the nose, ये retina है, this is the inner layer retina. तो nose के पास जो retina का part है, this is known as the nasal retina. और जो दूसरा part है जो nose की तरफ नहीं बल्कि ears की तरफ है, this is known as temporal retina. So सबसे पहले तो आपको ये दो words पता होने चाहिए कि what is temporal retina and what is nasal. So suppose I'm saying this is the right eye and this is the left eye.
सो राइट आई का जो नोज की तरफ रेटिना का पोर्शन है, दिस इज टुवर्ड्स द नोज ना, ये नोज है, सो दिस इज गोइंग टू बी नेजल एंड दिस इज गोइंग टू बी टेम्पोरल। तो अगर आप नोट करें कि जो नेजल रेटिनल फाइबर्स हैं, दीज वन, यानी यहाँ पे नोज है सेंटर में, तो ये वाले फाइबर इस लेफ्ट आई के और ये वाले फाइबर राइट आई के। सो जो नेजल फाइबर्स हैं ये एक्चुअली क्रॉस करते हैं टू द ऑपोजिट साइड। रेटिना से जो नर्व निकलती है उसको हम, दिस इज ऑल द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है फ्रॉम द लेफ्ट आई, ये ऑप्टिक नर्व है फ्रॉम द राइट आई। और इन दोनों ऑप्टिक नर्व्स में ये दोनों तरह के फाइबर्स हैं जो अलग अलग कलर से डेजिग्नेट किए हैं। सो नेजल फाइबर्स आर डेजिग्नेटेड फॉर द लेफ्ट इन ब्लू and temporal fibers are designated for the left in red and opposite is true for the right eye। तो अगर आप लेफ्ट आई को ट्रेस करें कि जो नेजल फाइबर्स हैं ब्लू कलर वो ऑप्टिक नर्व में आए और फिर ये ऑप्टिक कियाज्म में ये क्रॉस कर गए, देखें ब्लू लाइन क्रॉस कर गई टू द ऑपोजिट साइड। बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो नेजल फाइबर्स हैं जो कि यहाँ रेड में शो किए हैं, दे गो इन द ऑप्टिक नर्व, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक कियाज्म में दिस इज द ऑप्टिक कियाज्म, यहाँ ये क्रॉस कर गए ऑपोजिट साइड। तो अब ये जुमला आपको समझ में आएगा कि द नेजल हाफ के फाइबर्स हैं दे क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड, जबकि जो टेम्पोरल हाफ है, अब लेफ्ट आई को देखिए, दिस इज द टेम्पोरल हाफ, और इस टेम्पोरल हाफ के फाइबर्स ऑप्टिक नर्व में क्रॉस नहीं किए टू द ऑपोजिट साइड, दे ट्रेवल ऑन द सेम साइड। यानी लेफ्ट साइड के टेम्पोरल फाइबर लेफ्ट साइड ही में ट्रेवल करके आगे चलेगा, इसी तरह राइट साइड के टेम्पोरल फाइबर राइट साइड ही पे ट्रेवल करके आगे चलेगा। सो द पॉइंट इज कि जो नेजल fibers हैं of the retina, they cross to the opposite side and the temporal fibers do not. Okay, ये इतनी सी बात अक्सर लोगों को नहीं समझ में आती, it's very important. The fibers of each optic tract then synapse in the dorsal lateral geniculate nucleus. So कहाँ कहाँ स्टोरी चलती गई? सबसे पहले रेटिना, so this is retina, रेटिना से optic nerve is the next area जहाँ से fibers गुजर रहे हैं. Then number 2 is optic chiasm, जहाँ criss crossing हो रही है nasal fibers की. ऑप्टिक कियाज्म के बाद जो आगे कंटिन्यूएशन है, दिस इज नोन एज ऑप्टिक ट्रैक्ट। अच्छा, ऑप्टिक ट्रैक्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कौन से फाइबर्स हैं, देखें ऑप्टिक ट्रैक्ट में अगर मैं लेफ्ट साइड, इसको मैं लिख ही देता हूं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट की बात करूं तो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट आई के टेम्पोरल फाइबर्स हैं और राइट आई के नेजल फाइबर्स हैं। अगर ये जुमला मेरा नहीं समझ में आया, इससे आगे वीडियो मत देखना, पीछे जाओ दोबारा वीडियो देखो, ठीक है। सो लेफ्ट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट साइड के टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स हैं और राइट साइड के नेजल टेम्पोरल फाइबर्स हैं। इसी तरह राइट साइड के ऑप्टिक ट्रैक्ट में राइट साइड के टेम्पोरल फाइबर्स हैं और लेफ्ट साइड की नेजल फाइबर्स हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये जुमला समझ में नहीं आया वीडियो आगे मत देखना। अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है, it goes in synapse in the body which is known as the lateral geniculate body. So यहाँ पे इसका जिक्र हो रहा है कि they go and synapse in the lateral geniculate body of the thalamus. From there the geniculocalcarine fibers pass to the optic radiation. So these are the optic radiations which are coming out from the lateral geniculate body. So this is the next step then. So you see optic eye से optic nerve, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कियाज्म से ऑप्टिक ट्रैक्ट से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन, एंड अल्टीमेटली इट गोज फ्रॉम द ऑप्टिक रेडिएशन टू द विजुअल कॉर्टेक्स। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज बेसिकली द विजुअल पाथवे। सो विजुअल पाथवे अगर आपसे कोई पूछे तो आपने इसी तरह बताना है कि इट गोज फ्रॉम द रेटिना टू द ऑप्टिक नर्व टू द ऑप्टिक कियाज्म, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट, ऑप्टिक रेडिएशन एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। नाउ ऑप्टिक नर्व में फाइबर का कंपोजिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि नेजल फाइबर किस तरह है, टेम्पोरल, और फिर ऑप्टिक कियाज्म में जो क्रिस क्रॉस हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो ऑप्टिक ट्रैक में फाइबर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू मस्ट मास्टर इज द विजुअल पाथवे। ये नहीं पता तो आपको विजन का कुछ नहीं समझ में आएगा। नाउ द विजुअल फाइबर्स ऑल्सो पास टू सेवरल ओल्डर एरियाज ऑफ द ब्रेन फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक्ट्स to the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus. So ये तो स्टैंडर्ड विजन पाथवे है और इस स्टैंडर्ड विजन पाथवे में थैलेमस तो आया था लेकिन हाइपोथैलेमस नहीं आया था। Now here the optic tract are also connecting to the hypothalamus and presumably to control circadian rhythms and synchronize various physiological changes of the body with the night and day. So this is where it gets complicated and this is where it gets out of control. We don't know how vision is then linked and associated with hypothalamus and some other parts of the body. So for example midbrain से भी इसका connection है
और उसका कनेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द मूवमेंट्स ऑफ द आई हैव टू बी कंट्रोल्ड एंड द प्यूपिलरी रिएक्शंस हैव टू बी कंट्रोल्ड एंड देयर इज आल्सो fiber connection with the superior colliculus to control the rapid movement of the eye. There is also connection of the visual pathway with the ventral lateral geniculate nucleus of the thalamus and the surrounding basal region of the brain, and they control the behavioral function. So point ये है कि जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि you are just looking at it like a camera. So this is the difference between you and a camera. Camera just captures the image, nothing else. But what you do is you connect the visual pathway with hypothalamus, with midbrain, with here, with there, because you try to link the vision with emotions. So for example, if you look somebody whom you love quite a lot, तो आपका body का behavioral response different होगा. But if you see somebody whom you don't love, in fact whom you hate, तो आपका body का different बिल्कुल behavior होगा. So what you see डिपेंड्स कि आपका बिहेवियर क्या होगा बिकॉज आपका जो विजुअल पाथवे है वो बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स के साथ कनेक्टेड है. दिस इज व्हाट इज नोन एज कनेक्शन विद द ओल्डर एरियाज ऑफ द ब्रेन. और ये जो स्टैंडर्ड विजुअल पाथवे है दिस इज कॉल्ड द न्यूअर सिस्टम. Thus, the visual pathway can be divided roughly by this mechanism into an old system and a new system. For direct transmission of visual signals to the cortex, so this is the direct new vision pathway, and connection with the other parts of the brain is known as the older system. Okay? So that's all very important information here. Humans are beautifully designed. Okay? In many primitive animals, however, even visual form is detected by the older system. So there has been an evolutionary curve for these two systems to be developed. Function of the dorsal lateral geniculate nucleus of the thalamus. So अब इसकी बात हो रही lateral geniculate body की. Now, the optic nerve fibers of the new visual system. When we say new visual system, it means the standard pathway. ये जो अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक chiasm, ऑप्टिक ट्रैक्ट ये सब चीज़ें थी. They terminate in the dorsal lateral geniculate nucleus located at the dorsal end of the thalamus, so called the lateral geniculate body. So इसकी बात हो रही है lateral geniculate body, and the lateral geniculate body serves two principal functions. Number one, it relays visual information from the optic tract to the visual cortex by optic radiation. So it's a relay center. यहाँ signals की synapses हो रही है. So that is one function. And this relay function is so accurate that there is exact point-to-point transmission with high degree of spatial fidelity. इसका मतलब ये है कि temporal fibers, और क्योंकि देखिए ना इसमें जो synapse हो रहा है इसमें सेम साइड की आई के temporal fibers आ रहे हैं और अपोजिट साइड के nasal fibers आ रहे हैं और वो इसी तरह से segregated रहते हैं. So this is called maintenance of spatial fidelity. After passing the optic chiasm, half of the fibers in each optic tract are derived from one eye and half are from the other. ये बात हमने डिस्कस की अब कई दफ़ा. However, the signals from the two eyes are kept apart in the dorsal. So ये जो maintenance है fibers जो अलग अलग part से आ रहे हैं उनकी integrity maintain की जाती है in the lateral geniculate body. And however, the signals from the two eyes are kept apart in dorsal lateral geniculate nucleus. This nucleus is composed of 6 nuclear layers. सुने इस बात को, ये important है जो चीज़ आपको याद रखनी है. Layer 2 and 3 and 5 receive signal from the lateral half of the ipsilateral retina, which means the temporal जो retina है same side की, that will land up into these 3 nuclear layers, whereas layer 1, 4 and 6 receive signal from the medial half of the opposite eye, which is the nasal half. The respective retinal areas of the two eyes connect with the neurons that are superimposed over one another in paired layers, and similar parallel transmission is preserved until its way to the cortex. So ये डिग्री ऑफ सेपरेशन मेंटेन की जाती है कि फाइबर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन मीडियल हाफ यानी नेजल हाफ से ला रहे हैं या टेम्पोरल हाफ से ला रहे हैं, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज मेंटेन टिल इट रीचेस द कॉर्टेक्स. ओके, so that was one function of the geniculate body, lateral geniculate body, and this function means relay and passage of information in distinct pattern form. And the second major function of the lateral geniculate body is to gate the transmission. This is extremely important, and we actually don't know how it is done. But what happens is lateral geniculate body controls the amount of signal that is allowed to pass to the cortex. The nucleus receives gating control signal from two major sources. One is ये details आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है. But the point is this, कि there are inhibitory signals to the lateral geniculate body from different parts of the brain. अब ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में ऐसा नहीं है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी जा रही है. नो, द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय inhibitory signals from different parts of the brain, and those, at least two you should remember, those two inhibitory signals
control the amount of information that passes through the lateral geniculate body. और वो inhibitory signals हैं corticofugal fibers and reticular areas of the mesencephalon. So they're connected with the lateral geniculate body. Okay, and finally, the lateral geniculate body is divided in another way. So this is another way of dividing the lateral geniculate body, which is layer 1 and 2 are called magno. आपको पता है मैंने बताया ना 6 layers होती हैं total. So layer 1 2 को हम कहते हैं magnocellular because they contain large neurons. बस इतनी information काफ़ी है. Further if you want to study कि ये neurons input कहाँ से ले रहे हैं, so M cells of the retina, because retina की भी layers मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, so that is going to the layer 1 and 2. And the magnocellular system provides a rapidly conducting pathway to the visual cortex. However, this system is colorblind, so this is not important for color recognition. Okay, layer 3 and 6 of the lateral geniculate body are termed as parvocellular layers because they contain large number of small to medium-sized neurons, and they receive input from P retinal ganglion and they transmit color. So therefore, accuracy of vision, acuity, and color transmission is the job of parvocellular layer. So what we have been talking about up till now in the very first heading is the visual pathway. You should master the concept of how the visual information travel to the primary visual cortex from the eye, and then what are the different organizational setups within the lateral geniculate body. Now let us start talking about how is the organization and function of visual cortex actually maintained and performed. So what are the different parts of the visual cortex and how things are organized there. So let's start the organization of visual cortex. Visual cortex की अगर बात करें cerebral hemisphere पे, तो basically it is present on the medial aspect of the occipital lobe of the brain. So you know this is the occipital region. तो इसका जो medial side है, so this is where you have removed one cerebral hemisphere. तो ये medial side आपको दिख रहा है. That is basically the visual cortex. Like the cortical representation of other sensory system, the visual cortex is also divided into primary visual cortex and the secondary visual cortex. जो primary visual cortex है, it lies in the calcarine fissure area. अब brain के anatomy आपने पढ़ी हुई है अगर, तो आपको याद होगा कि where is the calcarine fissure, extending from the occipital pole to the medial aspect of the occipital cortex. So you can have a look at this diagram. For example, you see how the visual cortex is basically organized. So we have like primary visual cortex area, and then we have surrounding this primary area the secondary area, and here in the middle you see is the calcarine fissure. So calcarine fissure के दोनों तरफ primary cortex area divided है. This area is the terminus for the direct visual signals from the eyes. ये जो पूरा पाथवे हमने अभी डिस्कस किया कि ये पूरा रेटिना से टू द ऑप्टिक नर्व टू द ऑप्टिक chiasm ट्रैक्ट, तो अल्टीमेटली ये लैंड अप करता है इन द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, and signals from the macular area of the retina terminate near the occipital pole. So that's the location for the area जिसकी highest visual acuity है, whereas signals from the more peripheral retina terminate at or in the concentric half circles anterior to the pole. So not very important information, but I mean if you want to remember कि कौन से signals कहाँ land up करते हैं. The upper portion of the retina is represented superiorly, so it's not like the other inputs जिसमें in many parts of the body जो lower part of the body है वो upper part of the brain में represent हो रहे होते हैं, यानी inverted position में. यहाँ ऐसा नहीं है. So the upper part of retina is actually represented superiorly in the primary cortex, and the lower portion is similarly represented inferiorly. Note in the figure the large area that represent the macula. Now macula is the region जहाँ retinal fovea transmits the signal. Na? It is to this region that the retinal fovea, and you know that fovea is responsible for what? For the highest visual acuity. There's a very great degree of visual activity, is the highest visual activity, also the color vision. Based on the retinal area, the fovea has several hundred times as much representation in the primary visual cortex as do most of the peripheral portions of the retina. So point basically ये है कि the representation of the highest acuity area is highest. Okay, the primary visual cortex is also called visual area 1 or striated. So remember all these names. Either you call them primary visual cortex, you call them visual area 1 or the striate cortex. All are synonymous. क्योंकि ये जो सेकेंडरी विजुअल एरिया है फिर इसके सिनोनिमस नाम इसी हिसाब से डिफरेंट होंगे, अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में.
Now, when we talk about the secondary visual area, is also known as the visual association area, क्योंकि primary visual cortex ये है, इसके साथ ये associated area है. It lies lateral, anterior, and superior to the inferior, also inferior to the primary visual. So, if this is the primary visual cortex, you see, इसके superior, इसके inferior, इसके anterior, इसके posterior, surrounded by the secondary visual cortex area is the primary cortex area. So primary visual cortex is in the middle. It is surrounded in all the directions by the secondary visual area. Most of these areas also fold outward over the lateral surface of the occipital and parietal cortex. Secondary signals are transmitted to these areas for analysis of visual meanings. For example, on all the sides of the primary visual cortex is the Brodmann area 18, which is where virtually all the signals from the primary visual cortex pass next. Therefore, the Brodmann area 18 is known as visual area 2. So, primary area, which is visual area 1, and then Brodmann surrounding area is visual area 2. The other more distant secondary visual area have specific designations such as V3, V4. Okay, visual area 1 is the primary cortex area, visual area 2 is the Brodmann area 18, then we have visual area 3, visual area 4, and so on and so forth. The point is that the visual cortex communicate quite a lot with the other parts of the brain, because you just not only see the image, you interpret the image, you connect the image with emotions. That's an important point for you to remember. Okay, now the primary visual cortex has 6 major layers, and this is like other portions of the cerebral cortex. There are 6 layers, distinctive layers. Also, as is true for the other sensory systems, the geniculocalcarine fibers terminate mainly in layer number 4. But this layer is also organized into further subdivisions. So I would recommend to actually lose this text. Not too important for you कि कौन से exactly fiber किस area में आ रहे हैं, but there are, and to be honest, I mean, let me tell you this, things are not entirely clear how this cortical layering basically works. जो थोड़ा बहुत हमें पता है वो ये कि ये मैं ऑलरेडी पिछले कुछ मिनटों में टेक्स्ट में बता चुका हूँ कि रेटिना की जो एम गैंग्लियन फाइबर्स हैं, दे गो टू द मैग्नोसेलुलर लेयर व्हिच देन कोऑर्डिनेट विद लेयर 4, एंड जो रेटिना से पी गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं, दे गो टू द पार्वोसेलुलर लेयर एंड दे कोऑर्डिनेट आल्सो एट द लेवल ऑफ फोर्थ नंबर्ड लेयर. सो ये जो 6 लेयर्स हैं उसमें से नंबर 4 पे दे कोऑर्डिनेट. नाउ the retinal P ganglion, so this is kind of black and white thing, and this is for color images, and exactly we don't know how the color image is processed here, but it seems like there are neuronal bundles. तो यहाँ पे बहुत सारे neurons का ऐसा bundle है which takes a gross form of a cone, and these cones are called color blobs. Okay, so what do we mean by color blobs का भी यहाँ जिक्र आएगा. Interspersed among the primary visual columns as well as among the columns of some of the secondary visual areas, special color blobs are present. They receive lateral signal from adjacent visual columns. Therefore, these blobs are presumably the primary areas for deciphering color. So, इसी इसमें कुछ भी डिटेल नहीं है क्योंकि हमें पता भी नहीं है. But we see physiologically कि अगर हम इसकी dissection पे देखते हैं, anatomic physiology देखते हैं, तो इस तरह से हमें न्यूरॉन के bundles नजर आते हैं in the form of these columns, which is what we call the color blobs. Okay. Vertical neuron columns in the visual cortex. The visual cortex is organized structurally into several million vertical columns of neuronal cells, with each column having a diameter of 30 to 50 micrometers. The same vertical column organization is found throughout the cerebral cortex in other areas as well. So basically ये कह रहा है कि बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे vertical column के फॉर्म में होते हैं. What they're doing exactly, इनका क्या फंक्शन है, अभी इतना क्लियर हमें पता नहीं है. After the optic signals terminate in layer 4, they are further processed as they spread outward and inward along each vertical column unit. This processing is believed to decipher separate bits of visual information at successive stations along the pathway. The signals that pass out to layer 1, 2, and 3 eventually transmit signals for short distance laterally in the cortex, and those signals which go to layer number 5 and 6 excite the neuron जो कि ग्रेटर डिस्टेंसेस को देख रहा है. सो ये एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस है कि इस तरह शायद काम होता है. टेक्निकली दे ऑल लैंड अप इन लेयर नंबर 4, और लेयर 4 से फिर दे गो टू आइदर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, डिपेंडिंग अपॉन नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या फार ऑब्जेक्ट देख रहे हैं. ओके, नाउ इंटरेक्शन ऑफ विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम 2 सेपरेट आईज. नाउ
Obviously, you have got two eyes, and you make the image using both the eyes. Recall that visual signals from the two separate eyes are relayed through separate neuronal layers in the lateral geniculate nucleus. So you remember this pathway. हमने यहाँ ये बात काफ़ी डिटेल में बार बार की है, और अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो दोनों आईज से आ रही है. यानी अगर मैं इस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की बात करता हूँ, विच सपोज इज द लेफ्ट साइड, तो इट इज रिसीविंग fibers from the temporal end of the left eye, and it is also receiving fibers from the nasal end of the right eye. तो opposite. So यहाँ पे जो fibers आ रहे हैं, they are coming from both the eyes. Okay, so that's an important concept to remember. These signals remain separated from each other when they arrive in the layer 4 of the primary visual cortex. In fact, layer 4 is interlaced with strips of neuronal columns. With each stripe about 0.5 millimeter wide, the signal from one eye entered the columns of every other stripe, alternating with signal from the second eye. So basically point ये है कि your primary visual cortex is capable of distinguishing the images coming from different parts of the eyes. The cortical area decipher whether the respective areas of two images from the two separate eye are in register with each other or not. और register होने का मतलब क्या है? Whether corresponding points from the two retina fit with each other or not. In turn, the deciphered information is used to adjust the directional gaze of the separator. So point basically ये है कि आप एक ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, और अब ये एक आँख ये है और दूसरी आँख ये है. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि जो नेजल हाफ के फाइबर्स हैं वो तो चले गए उधर, इस आंख के नेजल हाफ के फाइबर यहाँ आएंगे, और इस आंख के टेम्पोरल हाफ के फाइबर्स यहाँ आके प्रोसेस होकर इस जगह पहुंचेंगे. सो योर ब्रेन देन एनालाइजेस कि सेम ऑब्जेक्ट को जो आप देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है ये वाली आंख इतना बड़ा देख रही है उसको और ये वाली आंख इतना छोटा देख रही है. तो अगर ये इस तरह है तो दे आर अनरजिस्टर्ड, दे आर नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर. लेकिन अगर ये दोनों एक ही तरह के पॉइंट्स हैं, दे आर फिटिंग वेल विद ईच अदर, सो दे आर सेट टू बी इन सिंक. ओके. Two major pathways for analysis of visual information: the fast position and motion pathway, and then the accurate color pathway. What do we mean by this is that analysis of the three-dimensional position, gross form, and motion of the object of the analytical pathway demonstrated in 52.3, which is where is 52.3? This particular diagram. How do different areas of the brain interact with each other? The black arrows analyzes the third-dimensional position of the visual object and space around the body. This pathway also analyzes the gross physical form of the visual scene as well as the motion in the scene. यानी आप एक गाड़ी में बैठे में से फॉर एग्जांपल, और वो गाड़ी चल रही है और इतना बड़ा पहाड़ आपके सामने है, तो जैसे जैसे गाड़ी जा रही है, so you feel like the mountain is also moving. So you have the sense of movement perception. This pathway reveals where every object is during each instant and whether it is moving or not. After leaving the primary visual cortex, the signals flow generally into the posterior mid-temporal area, into the occipitoparietal cortex, and the signals transmitted in this position from form motion pathway are mainly from the large M optic fiber. So this is a lot of information, pretty much confusing because things are not clear. We don't exactly know. So I mean, you can simply avoid this if you want. If you want to remember, the facts are in front of you. And then there is visual detail and color pathway. So this basically is the job of the primary cortex. The red arrows passing from the primary visual cortex into the secondary visual areas of the inferior ventral medial occipital temporal cortex tries to interpret the image. So basically अगर आप ये diagram देखें, so there are some black and some red pathways. It is trying to solve the mystery कि हम images को देखते कैसे interpret कैसे करते हैं. Okay. अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है. हमें इतना पता है कि जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है, इट इंटरेक्ट्स विद वेरी वास्ट रेंज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. सो इट ट्राइज टू मेक सम सेंस आउट ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग सीन. ओके. So with this, let us move on to the neuronal patterns of stimulation during analysis of visual images. कि जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो how do you actually start analyzing the images? And इस पूरे डिस्कशन को let me make it very simple for you. So we basically analyze the contrasts in the visual images. यानी ये बड़ी मज़े की चीज़ है. आप किसी भी चीज़ का फॉर्म देखते हैं, यानी वो चीज़ है कैसी, छोटी, लंबी, पतली, मोटी, और आप उस चीज़ का ऑब्वियसली कलर देखते हैं. अदर थिंग्स वी ऑल्सो मेजर इज द डेप्थ ऑफ द थिंग एंड द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दोज थिंग्स, के वो
थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से लोकेटेड हैं. सो फॉर्म का मतलब ये है वो चीज़ राउंड है, गोल है, लंबी है, छोटी है. कलर का मतलब ये है कि उसका एक्चुअल कलर क्या है. सो एवरीथिंग which you are seeing, you analyze on these different pathways. So if a person looks at a blank wall, आपके सामने एक सफ़ेद दीवार है, उसको आप देख रहे हैं, only few neurons in the visual cortex will be stimulated, regardless of whether the illumination is whatever the color is, yellow है, red है, bright है, dark है. Therefore, what does the primary visual cortex then detect? It detects the borders. अगर उस wall पर, suppose मेरे सामने एक wall है जिस पे कोई भी चीज़ drawn नहीं है, but then you start seeing a plus sign on the wall. एक सफ़ेद wall पर आपने red color से इस तरह से आपने एक plus sign बना दिया बड़ा सा. So that is what happens on your retina. You start perceiving it. And in the cortical area, in the primary visual cortex, this is how you look at the borders. So this is the border that you actually recognize on any object. और color भी ऐसे ही है. You simply identify the lines and borders, and that also happens for color detection. For color detection, मैं अभी आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ. ये पैराग्राफ इज देन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि यू डिटेक्ट द बॉर्डर्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो जो भी सीन आप देख रहे हैं, आप अगर कोई दरख्त देख रहे हैं तो उस पूरे बैकग्राउंड में इस दरख्त के जो बॉर्डर्स हैं बेसिकली ये डिफाइन कर रहे हैं इसकी फॉर्म को और इसके कलर को भी. सो डिटेक्शन ऑफ कलर इज द सेम थिंग रिटन है, और मैं इस पर भी एक बहुत अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन मुझे मिली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. कलर इज डिटेक्टेड इन मच द सेम वे that lines are detected by means of color contrast, and that makes the whole perception in your brain. But again, we don't know too much details about it, and the thing that I had to show to you is this image. Now look at this image. Initially जब आप इस image को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये बंदी ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, इसने येलो कलर की, इसने ब्लू कलर की. Now have a closer look at this image. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ. This image is black and white basically. आप हर बंदी की टी शर्ट देखें, इसकी जो टी शर्ट है ये, इस पे आप देखें इट इज़ वाइटिश, ये टी शर्ट ग्रे नज़र आ रही है, ब्लैकिश, इसमें कोई कलर नहीं है. दीज आर ओनली द लाइन्स. इस बंदी की टी शर्ट भी अगर आप गौर से देखें ये ग्रेइश नज़र आ रही है. दीज आर द लाइन्स. इस पर कोई लाइन नहीं है तो ये वाइट ही नज़र आ रही है. सो दिस इज बेसिकली अ ब्लैक एंड वाइट इमेज. इस पर देखें सिर्फ कलर्स लाइन्स के हैं और टी शर्ट का कोई कलर नहीं है. इसकी टी शर्ट देखें कोई कलर नहीं नज़र आ रहा है इस इमेज में. इसमें देखें ग्रे नज़र आ रही है, इसमें देखें ग्रे, इसमें देखें वाइट. सो दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट इमेज बेसिकली. लेकिन आर्टिस्ट ने क्या किया है कि हर टी शर्ट पर इस पर ब्लू लाइंस लगा दी, इस पर येलो लाइंस लगा दी, इस पर ग्रीन लाइंस लगा दी, इस पर रेड लाइंस लगा दी. अब वो लाइंस ऐसा परसेप्शन दे रही हैं कि शायद ये कलर्ड इमेज है, क्योंकि आपका ब्रेन उसको प्रोसेस ऐसे करता है ना. आपका प्रोसेस लाइंस को देखता है, कंट्रास्ट को देखता है. सो that's a very good representation of how you actually perceive images. Okay, so whatever I'm saying, I mean this is a tough chapter to study, but आप इसका अगर basic concept समझ लेंगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी. Number one, we don't have a lot of information, and since we don't have a lot of information, we try to make things a lot more hypothetical in a way to understand them appropriately. So मुश्किल chapter है, लेकिन यार फोकस करो जिन बातों पे जो समझाई हैं, क्योंकि इसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं, वरना आपको मुश्किल होगा. ठीक है, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं. और अब जो दो हेडिंग्स मेरे ख्याल रह गई इस चैप्टर की, उसमें लार्जली विल बी टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द आई एंड देयर कंट्रोल, जो आप एनाटॉमी में भी मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ते हैं. प्रोसेसिंग ऑफ द इमेजेस पर इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, जो अब तक मैंने बताई है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द आई एंड देयर कंट्रोल. सो टू मेक फुल यूज ऑफ विजुअल एबिलिटीज ऑफ द आईज, almost equally as important as its interpretation of the visual signal, eyes की जो movement है वो भी equally important है. Muscular controls क्या क्या हैं eye movement की? The eye movement are controlled by three pair of muscles. These are medial and lateral recti. So recti यानी straight muscles हैं. Then we have superior and inferior recti. So I mean if you look at the diagram, medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, and then there are oblique muscles, superior and inferior obliques. The medial and lateral recti contract to move the eye from side to side. यानी जब ये medial rectus contract करेगा तो eye इस डायरेक्शन में मूव करेगी, lateral rectus इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगा. Same goes with superior and inferior recti muscles. The superior and inferior recti contract to move eyes upward and downward, while the oblique muscles function mainly to rotate the eyeballs to keep the visual field in the upright position. So हर मसल के अपने अलग अलग काम हैं, उनकी अपनी अपनी डायरेक्शंस ऑफ अटैचमेंट्स हैं. और कौन से न्यूरल पाथवेज हैं जो आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? The brain stem nuclei for the third,
Fourth, 6 cranial nerves and their connections with the peripheral nerve are important for ocular muscles. Also shown in the interconnections among the brainstem nuclei via the nerve tract called the medial longitudinal fasciculus. Each of the 3 sets of muscles, ये तीनों sets, यानी superior inferior rectus, medial lateral rectus and superior inferior obliques, they reciprocally innervate it so that one muscle of the pair relaxes while. So this is the classical definition of what we call the antagonistic muscles. Okay, then cortical control जो है oculomotor पूरे apparatus का, that is something that we have to view, and this is a very good diagram to interpret this one and then this particular diagram, figure 52.8. So that shows you how the movement of the eyes are controlled. Let's have a look. Figure 52.8 illustrates cortical control of the oculomotor apparatus, showing a spread of signal from visual areas to the occipital cortex through the occipitotactile and occipitocollicular tracts to the pretactile and the superior. So connection with the brainstem. From both the pretactile and the superior colliculus areas, oculomotor control signals pass to the brainstem nuclei of the oculomotor nerve. Strong signals are also transmitted from the body's equilibrium control center. So basically what's happening, if you look at this particular diagram, you see that's a good one, showing extraocular muscles of the eye as well as their innervation. So how are they being innervated? There are different nuclei that you see coming, fibers in the form of medial longitudinal fasciculus, and then nuclei for nerve 3, 4 and 6, and then the fibers going and supplying each and every muscle. So that's a good illustration for medial longitudinal fasciculus and cranial nerve 3rd, 4th and 6th, giving fibers to these muscles. Okay, if now you look at this diagram, this also tells you how these nervous pathways are then intimately connected with different parts of your brain. So that's neuroanatomy में हमने काफी detail में ये चीजें की हुई हैं. So I'm not gonna go into the details of those pathways at the moment. Now, fixation movements of the eye. Perhaps the most important movement of the eye are those that causes eyes to fix on a discrete portion on a field of vision. So for example, if you are looking at a scene, यहाँ पे ये बंदा भी है, ये भी है, ये भी है, गाड़ी भी है, दरख्त भी है, पहाड़ भी है, and now you're looking, but you have the ability to concentrate on one particular object. है ना, ये ability आपके अंदर ये नहीं है. So this is what is called the fixating movement of the eye. The voluntary fixation, जिसमें आप खुद अपनी आंखों को फिक्स कर सकते हैं, they are controlled by a cortical field located bilaterally, and you can actually gaze at a particular area. However, there is also involuntary fixation mechanism that causes the eyes to lock on an object of attention once it is found controlled by the secondary visual area. So again, clarity नहीं है, we don't know what's exactly happening, but ऐसा होता है ना यार, भीड़ में आपकी involuntarily किसी एक बंदे पे आंखें जम जाती हैं. So that's kind of involuntary fixation. Okay, to summarize, the posterior involuntary occipital control cortical eye fields automatically locks the eyes on a given spot. So that's the involuntary control. That is something that we don't have to discuss. It's gonna absolutely confuse you. Then what is saccadic eye movements? Now, a mechanism of successive fixation points. When a visual scene is moving continually before the eyes, such as when a person is riding a car, you are seeing things, आपकी आंखों के सामने बार बार चेंज हो रहा है ना, पूरा रोड चेंज हो रहा है, गाड़ियां बदल रही हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं. The eyes fix on one highlight after the other in the visual field, jumping from one to the next at the rate of 2 to 3 jumps per second. The jumps are called saccades, and the movements is known as opticokinetic movement. The saccades, यानी कि jumps, occur so rapidly that no more than 10% of the total time is spent moving the eye. So जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते ना, बिकॉज द सीन इज चेंजिंग, द कार इज रनिंग. saccadic movements during reading. During the process of reading, a person usually makes, जैसे मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ इस बुक को, several saccadic movement. तो मैं एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, फिर अगले पे जा रहा हूँ, फिर अगले पे जा रहा हूँ. In this case, the visual scene is not moving past the eyes. So किताब obviously move नहीं कर रही, but मेरी eyes are moving. So my eyes are moving so rapidly that I am jumping from one word to the other. So that is also saccadic movement of your eyes. Okay. Now, fixation on moving objects, which is known as the pursuit movement. अगर कोई चीज आपके सामने रोटेट कर रही है और आप उस चीज पर फोकस किए हुए हैं, तो काइंड ऑफ आपके आई बॉल्स भी रोटेट किए जा रहे हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल परस्यूट मूवमेंट. यू आर परसुइंग समथिंग. ओके. नाउ, सुपीरियर colliculi are mainly responsible for turning the eye and head toward the visual disturbance.
मैं इस वक्त बुक पढ़ रहा हूँ, अगर कोई मेरे रूम में एंटर होता है मैं अपना सर उठा के उसकी तरफ, अपनी आंखें उठा के उसकी तरफ देखूंगा. सो इवन द विजुअल कॉर्टेक्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड. ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल की बात हो रही है. अ सडन विजुअल डिस्टर्बेंस इन द लेटरल एरिया ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफन कॉजेज इमीडिएट टर्निंग ऑफ द आइज इन दैट डायरेक्शन. ऑटोमेटिकली आप उस तरफ देखते हैं कि कौन आया है. एंड सुपीरियर कॉलिकुलाई आर रिस्पॉन्सिबल, एटलीस्ट वी बिलीव दे आर रिस्पॉन्सिबल. ओके, देन फ्यूजन ऑफ विजुअल इमेजेस फ्रॉम द टू आइज. ऑब्वियसली आपकी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट को देख रही है ना. टू मेक द विजुअल परसेप्शन मोर मीनिंगफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फ्यूज. वरना ये होता कि एक बंदा आपके सामने खड़ा है, आपकी एक आंख अलग इमेज बना रही है, तो आपको ये बंदा एक्चुअली दो दिख रहा है. तो ऐसा तो नहीं होता. यू फ्यूज द इमेजेस. ओके, सो द विजुअल कॉर्टेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. We previously discussed that the corresponding points of the two retina transmit visual signals to different neuronal layers. Interaction occur between these cortical neurons to cause interference excitation in specific neurons when the two visual images are not in register. If they are in register, they are produced as one. But again, ladies and gentlemen, let me tell you, that's a beautiful system, and we have not been successfully able to crack the details of how exactly this happens. Now, neural mechanisms for stereopsis of judging distance of the visual object. Because the two eyes are more than 2 inches apart. ये हम पहले भी कर चुके हैं. मेरी पिछली वीडियो देखो जिसमें हमने बात की है ऑप्टिक्स की, वहाँ हमने स्टीरियोप्सिस को डिटेल में कवर किया हुआ है, जिसमें हमने चीज़ों का डिस्टेंस, उनकी डेप्थ, ये सब बातें कर रखी हैं. ओके, नाउ सो ये आपको डिफरेंट मूवमेंट्स के नाम बेसिकली पता होने चाहिए, कौन कौन से मसल्स हैं, उनकी नर्व सप्लाई क्या है, दैट सेक्शन, डिटेल्स, ऑल दीज थिंग्स. नाउ द ऑटोनॉमिक कंट्रोल. ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, ज़ाहिर है आइज हैं तो उनको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है, सिंपैथेटिक सप्लाई भी है. सो आइज आर इनोवेटेड बाय बोथ पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई. द पैरासिम्पैथेटिक ज़ाहिर है ये भी आपको पता है कि जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात आती है, सो देयर इज अ गैंग्लियन, देयर इज अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, देयर इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर actually arise in the Edinger-Westphal nucleus, the visceral nucleus portion of the third cranial nerve. And then it passes in the third nerve, because this is the nucleus of third nerve, so it passes in the third nerve, cellular ganglion, which lies immediately behind the eye. यहाँ पे वो synapse करेगा और post ganglionic fibers निकलेंगे, and these post ganglionic fibers then through the ciliary nerve go to the eyeball. So if you look at the diagram here for the parasympathetic supply, here in the central nervous system is the Edinger-Westphal nucleus. यहाँ से ये preganglionic fiber जा रहा है in third nerve और ciliary ganglion में synapse कर रहा है, and this is the post ganglionic fiber going to the eye. Okay, and if we talk about the sympathetic innervation of the eye, it originates in the first thoracic segment, and from there the sympathetic fibers enter the sympathetic chain. They pass upward in the superior cervical ganglion and they synapse with the post ganglionic neurons, और ये fibers पर निकल के जाते हैं along the surface of the carotid artery, and then they reach the eye. So if you look at this diagram here, this is the journey for sympathetic fibers. So they are from the upper thoracic segments, cervical sympathetic trunk, superior cervical ganglion, carotid artery से पहुंचते 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 आई तक. So this is the ganglionic synapse. These are the preganglionic fiber. That is the postganglionic fiber. Okay, simple story. Now, control of accommodation and focusing of eyes, and this is very important because if you are looking at a substance which is far away from your eye and then suddenly the object moves very close to the eye, your eye has to be focused. So you have to undertake accommodation. और अगेन ये हमने ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जो पिछले चैप्टर्स थे. Accommodation mechanism, that is mechanism that focuses the lens system of the eye, is essential for high degree of visual activity. और ये सारे के सारा गेम जो है आपके स्पेशल मसल्स हैं, वो मसल्स लेंस को इस शेप से इस शेप में ले आते हैं जब उनको रिलैक्स किया जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड इन ग्रेट डिटेल. सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड गो वॉच माय वीडियो प्रीवियसली, चैप्टर नंबर 50 और चैप्टर नंबर 51 इसी यूनिट का हमने उसमें अकोमोडेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, so basically what you do is you round off your lens to increase the focal strength of that lens जब कोई चीज नजदीक आ जाती है, and when the things move far away, then your lens becomes this shape, thin. Okay, now control of the pupillary diameter stimulation of the parasympathetic nerve also excite the pupillary sphincter muscle, thereby decreasing the pupillary aperture. तो आंखों में जो pupil का साइज है वो कम हो जाएगा, लाइट कम जाएगी, it's known as meiosis, and opposite यानी big हो जाना of the pupil is mydriasis.
Then pupillary light reflex. When light is shown into the eyes, the pupil constrict, and this reaction is known as pupillary light reflex. और इसका neural pathway जो है is illustrated in the upper two black arrows in 5211. So where is 5211? This particular diagram. So ये black arrows जो यहाँ नजर आ रहे हैं, this is the pupillary light reflex. कि how does ये light आई, ये information गई, यहाँ से दोबारा इंफॉर्मेशन वापस आई और लाइट रिफ्लेक्स हुआ. सो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है. When the light impinges on retina, a few of the resulting impulses pass from the optic nerve to the pretactal nuclei. From here, the secondary impulses pass to the Edinger-Westphal nucleus, finally back to the parasympathetic nucleus and constrictor sphincter of the iris. So light rays स्टिमुलस इधर प्रीटैक्टल न्यूक्लियस से एडिंगर-वेस्टफाल से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, प्री गैंग्लियनिक, सिलियरी गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियनिक और कॉन्स्ट्रिक्टर. दिस इज कॉल्ड द लाइट रिफ्लेक्स. ओके. And the function of the light reflex is to help the eye adapt extremely rapidly to the changing light condition. आप अंधेरे से रोशनी में जाएं, रोशनी से और रोशनी में जाएं. So your pupil changes its size. Okay. Wow. So you have a beautiful eye system and God has gifted you with this beautiful system. And next video we will start chapter number 53 जिसमें हम special sense से start करेंगे hearing की. So if you like the video, 3 chapter हमने किए हैं vision पर. So all the very best. I hope you understand them, and if you did, please share the videos with your colleagues, subscribe the channel, hit the bell icon. आपसे मिलता हूँ अगली मुलाकात में.